So cyclicity, we are done with the theory of cyclicity, unit position and tens position. That is last two digits. We will see one more approach for last two digits in remainders a little down the line. This was the last question we had completed. Find the last digit of the following. So now we'll be solving maybe 7 to 8 more questions. You'll have 2 minutes per question. Try. Find the last digit of this. There's a difference. There's a difference. Here, the base was a factorial and the power was also a factorial. In this case, the base is not a factorial. So go on, try. Take 2 minutes. Solve. Because the base is not 0. Earlier in the last example, the base was a factorial. In the factorial, after 5 factorial, digits become 0. So we did not calculate anything from 5 factorial onwards. 5 के आगे हमने कुछ भी calculate नहीं किया. Right now, it is not a factorial. So कुछ और सोचो. What all properties do you remember about unit digit cycle? So the patterns that you have learned are 2, 3, 7 and 8. They follow a cycle of 4. 4 and 9, they follow a cycle of 2. 1, 5, 6 and 0, they never change whatever you do. Another thing I have taught you in Cyclicity is when a number is even and the power is multiple of 4, digit is always 6. When the number is odd and the power is multiple of 4, digit is always 1. All of this theory has been covered earlier. In this particular example, if you see, from here onwards, if you notice, five factorial, 6 factorial, 7 factorial, all these powers are multiples of 4. They are all multiples of 4. When they are multiples of 4, if the base is 2, 4, 6, 8, and you put power 4k, digit will be 6. If the base is 1, 3, 5, 7, 9, not 5, 1, 3, 7, 9, you put power 4k, digit will be 1. For 5, it remains 5. For 0,
it remains 0. You have to work with these numbers. From here onwards, there are 10 numbers. There are 10 numbers which will have 0 in it. 10, 20, 30. What are these numbers? 10, 20, 30, 40 up to 100. Their unit digit will always be 0. 5, 10, 15. So there are 10 numbers. There are 10 numbers. 5, not 10 numbers, 5 numbers. 5, 15, 25, 35, 60, 45, 95. So there are how many numbers? There are 10 numbers. Again, 10 numbers. The unit digit is 5. Unit digit is 5. 10 times. So digit becomes 0. Now everything that remains is either even or odd. Where are we at? We are at 4 to the power 4. 4 to the power 4 till 100 to the power 100. There are how many numbers? There are 97 numbers. There are 97 numbers. Out of these 97 numbers, there will be 49 numbers which will be even, and there will be 48 numbers which are odd. In these even numbers, these 10 are counted. These 10 are already counted. So remove those 10. There are 39 even numbers. In these 48 odd numbers, these are already counted. These are 10 odd numbers. Remove those odd numbers. So 38. Now these 39 numbers, they will all end with 666. So 6. 9 into 6, 54. Unit digit is 54 ka 4. These numbers, 38 numbers will end with 1. So unit digit is 8. Now what remains? What remains? These three values. This is 1 to the power 1. So 1. This is 2 to the power 2. So 4. This is 3. 3 to the power 6. What is going to be unit digit? 3 ki power 4 plus 2. What is 3 square? 9. Unit digit is 9. So the total unit digit is addition of these numbers. 4 plus 8, 12, plus 1, 13, 13 plus 4, 17, 17 plus 9, 26. That is your unit digit. Go on, take your time, verify these calculations, understand the thought process. Then we go to the next question. Comment done once you jot it down, once you have written the solution down.
Once the power becomes a multiple of 4, all you have to take care of is the number even, is the number odd, is it ending with 5, is it ending with 0, that's all. So from 4 to the power 4 factorial, 4 factorial is 24, multiple of 4. You have to only look for unit positions of even numbers and odd numbers. Others confirm. Moving on. Try this. Now we are looking for last 2 digits. So for odd numbers, you should be able to convert that with 1 unit place, and whatever is the power, 1 will remain, and this number, tens position, multiplies with power for odd numbers. For even numbers, what is the pattern? You take out 2 common. 2 to the power 10 even, it is 76. 2 to the power 10 odd, it is 24. One more additional result, whenever the number is odd other than 5 and the power is 20, the digits are always 0, 1. This is the crux. This is the crux of what we have covered in the last lecture. Pattern of last 2 digits. ये सारा हमने cover किया in the last lecture. What is available? 2 to the power 222. So you think, how can you convert this in these formats, or how can you convert this in this format? Take 2 minutes. So you'll have to separate all the powers of 2. Always, if a number is even, you take away 2.
Now what you have is a odd number. In this odd number, the unit position is by default 1. बहुत अच्छी बात है. Unit position is already 1. So this one will remain. This is multiplied with unit position of power. Tens number is multiplied by unit position. So 2 into 1, 2. So the last two numbers of this number are 21. This I can rewrite as 2 to the power 10 22 times. That is 220 and another 2 square. So what is this? This is 2 to the power 10 bracket even. This is 76. What is 2 square? 4 into 21. That is your final answer. Use a calculator if you have to. These methods are created only to find last two places. 76 into 4 into 21. The outcome is 6384. So your focus should only be on 84. That is the tens place and this is the units place. Remove all of the twos. Remove all of the twos. Remove twos. Remove odd numbers. Odd number का rule ये है. There must be one in the last place. If one is not there, then you square, cube, take power 4, make it 1. बिना उसके solve नहीं होगा. Even numbers, there's a cycle for 2, pattern for 2. 2 to the power 10 even, 76. 2 to the power 10 odd, 24. Any odd number to the power 20 is 0, 1. Confirmation on this? Try this. तो पहले आपको स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, कुछ भी करके you must create one in the unit position. Unit position में one बनेगा, then you can apply the concept of odd. बिना उसके नहीं काम करेगा. So we all know 9 का square is 361.
So I have to find out 19 का square. So ये जो 2 है, it will divide 91. It can divide 45 times. बच गया एक, 19 to the power 1. So you will have to split the power like this. This is 261 into 19 to the power 1. ये कितना power है? 45, 361. तो 3 का कोई रोल नहीं है. 3 does not matter क्योंकि हमें लास्ट के 2 प्लेस चाहिए. 1 will remain. ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. 6 into 5, 30, 01 into 19 is 19. That's your answer. Let us say you want to verify, are we learning the concept correctly? Are the answers correct? You go to the web page wolframalpha.com. You'll have empty space, like in Google you have search space. In this you'll have empty space. You will have to type in this manner: 19 bracket power, this symbol of power, 91 space mod 100. Mod here is modulo. Modulo means remainder. So when you divide something by 100 and find remainder, you'll always get the tens place and units place. So whenever you are in doubt that your method is correct or not, your answer is correct or not, you can verify in this manner. There will be an empty bar, empty space. You type in the way I have written, press enter, and within 10 seconds it will give you the answer for remainder. For this question it will be 19. Confirmation on this? See, I have shared the screenshot in your WhatsApp group. Others confirm? Moving on. Try this. In this question, if you notice here, it is a odd number.
and power is a multiple of 20. This is your answer. Done. There's an odd number other than 5, non 5, and the power is 20. Digits are always 0 1. अगर आप 20 into 2 भी करोगे, it will be 0 1 square. 20 into cube करोगे, 0 1 cube. तो 0 1 का तो square cube 0 1 ही होगा. So you have an odd number other than 5, non 5, power 20 or 20k, digit 0 1. Let us say this question was 127 to the power 123. Let us assume that ऐसा होता. So this does not matter. 27 to the power 120 into 27 cube. ये क्या होता? ये 0 1 होता. With the help of calculator you must find this out, and that is your answer for last two positions. तो छोटे छोटे वेरिएशंस भी आप देखते जाओ, लिखो इनको. Try this. Again guys, generally speaking, never confuse the unit digit pattern with two digit pattern. This is a question from 2008. 7 has one very unique property to follow. 7 is the only number that at least I am aware of in which last two positions repeat in power of 4. एक बार आप observation देख लो. 7 to the power 1 is 07. 7 square 49. 7 cube 343. This 3 does not matter. 7 to the power 4 is 2401. So 24 does not matter. देखो power 4 में क्या आ गया? 01. So when I multiply it 7 times, I will have power 5. I multiply this 7 times, I'll have power 507. I multiply this 7, power 6, 49. I multiply this with 7. According to me, or as far as I am aware of, this is the only number that repeats two digits after cyclicity of 4. तो 4 का cycle है for unit digit as well. So do you notice here the power is by default a multiple of 4. Whenever the power is multiple of 4, what digits do you see? 0 1. If this was a question of 7 to the power, let us say 2018, let us imagine that. So what I will do is 2 to the power 2016. ये क्या है? This is 7 to the power. This is 4k. This is 4k plus 2.
दिस विल बी एज गुड एज 7 स्क्वायर. क्यों? 4k का साइकिल है. 4k इज द साइकिल. यू मस्ट फाइंड आउट साइकिल के बाद क्या बचा है. 2. तो digits are 49. Now make sure you understand the difference. This is not same as 17 to the power 2018. अब ये 7 नहीं है. Now it is 17. So do one thing. Try this. Give it a try. 17 to the power 2018. जो earlier लिखा है, earlier is solution for 7 to the power something. 7 is the only number that I know of which will repeat after a cycle of 4 for 2 digits also. 2 digits as well. ये 2 digits repeat कर रहे हैं इनके. 7 का पैटर्न 27 पे, 17 पे, 37 पे नहीं लगा. It's a new number now. So try this. So इसमें अभी आपको क्या करना पड़ेगा. Which power of 7 gives me 01? Power 4. तो ये सीखो. 7 square 1009 times. 7 square is 289. 2 does not matter. 1009. तब तक आपको पावर स्क्वायर करना है या पावर चेंज करना है until you get 1. Now can I say 89 square जब बनेगा, this will be 504 plus 1. Plus 1 कैसे लिखेंगे? 89 का पावर 1. So now you pay attention. What is 89 का स्क्वायर? Use a calculator, nothing wrong. आपको स्क्वायर करने के मेथड भी सिखाया हमने. You want to use that is fine. So 89 square turns into 21. 21 to the power 504 into 89. ये 1 रुकेगा. This 1 will remain. This is multiplied here. 2 into 4, 81 into 89. That is your answer. 81 into 89. The last two places are 09. That's your answer. You want to use Wolfram to verify your answer? Go ahead and do that. There's your answer. Moving on. Try this. If you have attended the last session, आपको पेन नहीं लगेगा.
यस 7 6। जो आपने 2 का पैटर्न देखा था 2 to the power 10 ends with 24। अब ये 24 का पैटर्न है 24 to the power even 76, 24 to the power odd 24। तो यहाँ से 2 का पैटर्न डिराइव होता है 2 का पावर 10 ब्रैकेट इवन 76, क्योंकि ये 24 है, ये 24 का पैटर्न एक्चुअली 2 to the power 10 odd, ये odd पावर दैट इज 24। सो ये ऑलरेडी 24 है, पावर इवन है, जॉब डन, सीधा आंसर। राइट डाउन द राइट साइड पार्ट इफ यू हैव मिस्ड द लास्ट लेक्चर। Try this. We need last 2 digits of n. So again, this kind of question could not have been created unless there is a pattern. We know these values 1 factorial 1, 2 factorial 2, 3 factorial 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120. Now you see, when you reach 5 factorial, the power is also 5 factorial. That means this number has a power. This number has a power 120 itself. You give me any power of 10, that many zeros will be there in the end. Here there is already a 0. So in 5 factorial to the power 5 factorial, this number will have 120 zeros in the end. भाई देखो 10 का square is 100, 2 zeros, 10 cube is 1000, 3 zeros, 10 to the power 4, 4 zeros। तो जब 120 के ऊपर 120 है, ये ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है, it will have 120 zeros। So anything from here onwards does not contribute in the 2 positions, or you need to place in tens places. So this will not even matter. So my question is only up to this point. So 1 to the power 1, 0, 1. 2 to the power 2, 2 to the power 2 is 4. Digits are 0, 4. Now here 6 to the power 6. You will need help of a calculator for this kind of thing, or what this looks like is 36 ka cube. I can write this as 6 square ka cube. So use a calculator. It's perfectly fine. It's perfectly okay. अब इसके थोड़ी ना आप बड़े बड़े मेथड लगाओगे। 36 into 36 into 36. So आखिरी में आ गया 5 6, 5 6. This contributes 5 6. अभी 24 की पावर 4 factorial, which is 24 itself. 24 की पावर क्या है ये? What is this? It's an even number. It's an even number. 24 to the power even is 76. So you have your answer now. Add these values. 1 plus 4
plus 56 plus 76. So आ गया 137. So the last two places 37. नहीं बेटा, it will be 37. प्लस माइनस एक बार चेक करो आप. क्लियर है? कंफर्मेशन ऑन दिस? Try this. See, remainder by 100 is asking for again last two positions. Remainder by 100 भी same चीज है, last two positions ही पूछ रहा है आपसे. You want to solve it separately or you want to solve it as 7 into 5, that is for you to decide. If I solve it separately, 7 का cycle we have seen few minutes back, 7 का cycle 4 का होता है. Is the power multiple of 4? Yes, 0 1. That's it. That is why in numbers you see same theorem 4-5 times. Then you see a question ऐसे 10 सेकंड में वैल्यूज मिलते हैं. This is 0 1 क्योंकि 7 का पावर 24 है, मल्टीपल ऑफ 4. अब 5 में कोई पैटर्न होता है क्या? 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625, 5 to the power 5 3125. तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? Whatever power you put here, 5 to the power anything more than 2,
2 से आगे, 2 या 2 से आगे यू पुट अ पावर, ये हमेशा क्या देगा 25। तो 01 into 25 is 25, that is your answer। 100 का क्या रूल है? कुछ नहीं, डिवाइडिंग बाय 100, फाइंडिंग रिमाइंडर इज लाइक फाइंडिंग लास्ट टू प्लेसेस। कोई नंबर आपके पास 3423, आप 100 से डिवाइड करोगे 34 टाइम्स, 3400, क्या बच जाएगा 23। अलग नंबर है 12789, आप डिवाइड करोगे 100 से 127 टाइम्स 12700, क्या बच जाएगा 89। So remainder by 100 is asking the tens position and the units position। Remainder by 100 means आखिरी के 2 डिजिट ही निकालने हैं। And yesterday one of the students called me, he had attended one master G class on LRDI and he was told there is a hack to crack cat LRDI। पेंसिल इरेजर लेके जाना एग्जाम में, उससे जल्दी सॉल्व होता है। So guys, don't do these things, don't fall for such stupid hacks। There are no hacks to crack cat। होता तो खुद नहीं कर लेता, अपना रिजल्ट छापता। So go on, try this। फिर तो ऐसा है तो स्केल भी लेकर चला जा, ज्योमेट्री में बड़ा काम आएगा, नाप के आंसर लगा लेना। घड़ी पहन के भी चला जा, फिर घड़ी को रोटेट करके एंगल वेंगल नाप लेना। क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट 5 to the power 64 and 16 to the power 18। What is unique about 16? 2 से बनता है, और जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? यू गाइस हैव अ पैटर्न फॉर दैट। 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है, थोड़ा देखो। 10 का पावर 1 में 1 0, 10 का पावर 2 में 2 0। सो कनेक्ट कनेक्ट 2 3 कॉन्सेप्ट्स। गिव मी आंसर, यू हैव 2 minutes। देखो अभी ऑनलाइन लोग मैराथन ले रहे हैं, 3 3 घंटे के, 4 4 घंटे के। आपके तो लेक्चर ही होते हैं 4 4 और 5 5 घंटे के। सो एवरी लेक्चर इज अ मैराथन फॉर यू गाइस। और क्या चाहिए आप लोगों को, बताओ।
वेरी गुड, वेरी गुड, सब आंसर्स वी हैव रीच्ड दैट। देखो सबसे पहले तो कभी भी डिजिट्स विजिट्स गिनने हैं, 5 दिखे 2 दिखे, 5 इंटू 2 इज 10। अब आप 10 का स्क्वायर दो, 10 का क्यूब दो, 10 का पावर 4 दो, तो डिजिट कितने, डिजिट 5 है, पावर से एक ज्यादा, ये 1000 है, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, डिजिट्स आर 4। ये क्या 100 है, तो डिजिट्स आर 3। तो एक ज्यादा डिजिट होता है एंड दैट इज बेसिक फॉर 10। नहीं तो अगर आपको याद है तो आपको मैंने लॉग्स भी पढ़ाया है, मैं लॉग्स भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। सो ये क्या हो गया, 5 टू द पावर 64 इंटू ये क्या हो गया, 2 to the power 4 into 18 कितना होता है, 72। कैन आई से ये 64 है और ये 72 है, 5 into 2 I can definitely create 64 pairs and then I have 2 to the power 8। 2 to the power 8 is 256। This number is 10 to the power 64। अब देखो होता क्या है, if I have 1000 multiplied by any number, let us say A B C, तो ये जो C है ये यहाँ आ जाता है, इट बिकम्स ए बी के पीछे उतने, ए बी सी के पीछे उतने 0। इफ द नंबर वाज ए बी सी डी इंटू 1 के पीछे लेट अस से 5 0, तो D यहाँ पर आ जाएगा और वो 5 0 ऐसे ही रहेंगे। सो डज इट मेक यू फील कि इसके डिजिट और इसके जीरोस ऐड हो रहे हैं, ये 1 गायब हो गया, 1 की जगह D आ गया। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3। इसमें कितने डिजिट होंगे, 64 डिजिट होंगे, इसमें 64 डिजिट और इसमें 3 डिजिट। तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा बेटा, देखो 256 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 0 0 0 0 चलता जाएगा 64 टाइम्स। 64 प्लस 3 67 digits, 67 digits are there in the given calculation, 67। अभी और भी कोई मेथड आपने सीखा है क्या, डू यू गाइज रिमेंबर एनी अदर मेथड? बट वो मेथड मैंने सिखाया आपको सिंगल नंबर के लिए। ऐसा कुछ हो जाए, लेट अस से सपोज करो 2 की पावर 72 में डिजिट गिनने हैं, तो व्हाट डू, वी अप्लाई अ लॉग। याद आ रहा है, लॉग का जो भी वैल्यू आता है उसमें इंटीजर पार्ट +1 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका एक ही लिमिटेशन है, इट वर्क्स ऑन अ सिंगल नंबर, दो मल्टीप्लाई करके हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। इफ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल नंबर, आपका काम हो गया। ये हमने कवर किया है ना, लॉगरिथम्स, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट। आपको इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, व्हाट डू, यू अप्लाई लॉगरिथम ऑन दिस। अब इसका जो इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट +1 is number of digits। all of this we have covered earlier in algebra logarithms। इसको भी हाईलाइट कर, एक छोटा रिवीजन हो गया। from the perspective of cat, we mentors suggest you 3-4 वैल्यू याद कर लो log के, और ये log है नॉट ln। log 2 is 0.301, log 3 is 0.4771, log 5 is 0.699। ये तो डेफिनेटली याद कर लो ये 3 वैल्यूज। इनसे थोड़ा मॉडिफाई करके वी कैन जनरेट 6 10 15 छोटा मोटा मोर वैल्यूज वी कैन जनरेट। log 2 log 3 log 5 लिख लो, हाईलाइट कर लो।
confirmation on this, guys? अच्छा, जो आप क्वेश्चंस और कंटेंट बना रहे हैं ये ऑलरेडी मास्टर क्लास +2 लेवल तक है, तो डोंट वरी, आपके वर्कशॉप्स और अच्छे लेवल के होंगे। तो ये सब रिवाइज रिपीट करने के बाद ही वर्कशॉप बैठना आपको बन सकता है। स्टार्ट विद वर्कशॉप्स, इससे 2 लेवल और ऊपर जाएंगे। तो रिवाइज रिपीट करते रहो, पिछले लेक्चर्स भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिनों में नोट्स आपने बनाए होंगे, यू मस्ट हैव रिटन फॉर्मूला समवेयर, वो रिवाइज रिपीट करते रहो। चलो, ये आपका फैक्टर्स का रिवीजन आ गया। दिस इज अ रिवीजन फॉर फैक्टर्स फॉर यू गाइस। चलो ट्राई। How many factors of 12 factorial do not end with a 5? What have I combined here? I have combined the concept of factors and factorials. तो वापस जाओ मेमोरी लेन में, फैक्टर्स कैसे गिनते हैं? हाउ आर फैक्टर्स काउंटेड?
सो फर्स्ट थिंग इज टू काउंट फैक्टर्स, आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. 12 will have what primes in it? 2, 3, 5, 7 and 11. अब पावर कैसे निकालते हैं? इफ यू रिमेंबर, प्राइम नंबर्स का डिवाइड बाय 2 6 टाइम्स, डिवाइड बाय 2 3 टाइम्स, डिवाइड बाय 2 1 टाइम्स. अब डिवीजन नहीं हो पाएगा. द एडिशन इज 10. 2 का पावर 10. सिमिलरली 3 का पावर चाहिए आपको. डिवाइड दिस बाय 3 4 टाइम्स, डिवाइड दिस बाय 3 1 टाइम्स, डिवाइड दिस बाय 3. नहीं हो सकता. व्हाट इज द एडिशन? 5. 5 का पावर चाहिए सीधा. 12 को डिवाइड करो 2 टाइम्स और हो नहीं सकता. 7 1 5 1. तो अभी फिलहाल हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर? टोटल फैक्टर्स, इनका पावर 1 से बढ़ेगा. 11 6 3 2 into 2. तो ये हो गया 6 into 6 36, 36 into 2 72, 72 into 11 792 फैक्टर्स आर देयर. हमें क्या चाहिए? नॉट एंडिंग विथ 5. आप बताओ कौन से नंबर 5 से एंड करते हैं? 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7. अगर कोई ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल ऑफ 5, ऑड मल्टीपल ऑफ 5, तो आखिर में 5 आता है, क्योंकि अब आपको ऑड मल्टीपल चाहिए. डू यू रिमेंबर दिस अप्रोच? सारे के सारे 2 गायब हो जाएंगे. आई विल नॉट कंसिडर एनी 2. ध्यान से, मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, तो मैंने 5 को बाहर रख दिया. जिसका मल्टीपल चाहिए होता है उसको बाहर रखते हैं. 3 की पावर 5, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1. 5 बाहर रहेगा. अब इसके फैक्टर्स गिनो. इंक्रीज इट बाय 1 6, increases by 1 2 2 2. अब जो आपके सामने है 2 into 2 into 2 8 into 6 48. इन सब के एंड में 5 है. these numbers end with 5. हमें ये नहीं चाहिए. so your answer would be 792 minus 48. 744 should be your answer. 744. Highlight this question. It covers a couple of fundamental parts, fundamental features, properties of factors. We have combined that with factorial. नया ही थीम बन गया. Guys, confirmation on this. Make sure you are verifying calculations as well.
Moving on. ये पहली बार आप सब पावर टू द पावर वाला क्वेश्चन देख रहे हो, बी केयरफुल. See, the pattern we have learned is कभी भी we need a cycle of 4. यहाँ पे पावर के ऊपर भी there is another power. So what you can do is look at this, look at this, look at this only. मुझे कन्वर्ट करना है इस चीज को इन द फॉर्म ऑफ 4. या 4 से रिमाइंडर निकालना, यू कैन थिंक लाइक दैट एज वेल. आप ऐसे भी सोच सकते हो 4 से रिमाइंडर निकालना है. अब जिनको थोड़ा बहुत रिमाइंडर्स पता है, वी हैव अनदर आई से 8 to 10 PPTs on reminders in theory. ध्यान से देखो, when 3 is divided by 4, the remainder is -1 and the power is even, so remainder is 1. ये जो आपने पावर लिखा है, this power that you have written is basically 4 के रिमाइंडर से एक ज्यादा, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा. You can use a calculator also. आप अगर n को 1 पुट करते हो, which is 81. 80 is what? 80 is 4k plus 1. आप अगर इसको 2 पुट करते हो, when you put this as 2, तो 3 की पावर 8 है. Please pay attention. 3 to the power 8 will be what? 3 square to the power 4, which is, ध्यान से देखना, 81 to the power 4. ये ऑलरेडी क्या दिख रहा है? 4k plus 1. आप इसको स्क्वायर करो चाहे क्यूब, ये तो 4k plus 1 ही रहेगा ना. सो आपकी जो पावर है इट इज 4k plus 1. सो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हम इफेक्टिव पावर ले लेते हैं. इफ मेरे पास वैल्यू वाज 21, तो व्हाट आई विल से इज 3 की पावर 20 plus 1, which is 3 की पावर 1. If I had, let us say, 3 to the power 23, I will say 3 की पावर 20 plus 3, which is 3 cube. ऐसा. तो ऑलरेडी ये 3 की जो पावर है इट इज 4k plus 1. That is basically 3 to the power 1, which is 3. इसका यूनिट डिजिट 3 है plus 1. The total unit digit is 4. Take your time. Try to understand this. Try to copy this. You guys have not seen पावर के ऊपर पावर वाले सवाल अभी तक. आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं. A की पावर B की पावर C. It is the first question of that kind. तो मुझे इसको B की पावर C को कन्वर्ट करके देखना था 4 के फॉर्म में. Is it 4k plus 1? Is it 4k plus 2? Is it 4k plus 3?
Done. Digit will be 4. Digit will be 4. So we have covered these rules again in algebra, but अभी numbers के point of view से कर लेते हैं. I will revise some formulas for you. If you come across x square minus y square, x का power 4 minus y का power 4, it can be rewritten like this. This can be rewritten like x minus y, x plus y, x square plus y square. As a general rule, I can say by looking at these two expansions, कभी भी x का power even minus y का power even, it must be same. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8. Power must be same. This is divisible by, देखो अगर नंबर 24 बनता है 4 into 6 से, डिवाइड भी तो होगा ना. If a number 28 is created by 2 into 14, तो डिवाइड भी होगा. Like this is created by multiplication of a and b. तो ये a से डिवाइड होगा x plus y और डिवाइड होगा x minus y as well as the multiplication of both. इससे भी डिवाइड होगा. देखो ना यहाँ पर भी तो आपका रिजल्ट आ रहा है. When the power is even, x minus y into x plus y, तो इन दोनों से डिवाइड होगा, तो इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा. More results of this kind. When you have cube, when you have power 5, even if you have power 7, what is unique? They are odd powers. They are odd powers. I want you guys to learn these universal expansions. बाहर में प्लस है तो ब्रैकेट में प्लस है. Look at that first bracket. अब it will be alternate. Power cube है, 1 less. Power is 5, 1 less. Notice coefficients कहीं पर भी नहीं है. Coefficients are basically 1. ये जो आप देख रहे हो, these are general expansion, universal expansion. Power 7 है, it will start from 6. Notice how the power is moving away from x. x का power कम होता जा रहा है. x का power कम होता जा रहा है and y is gaining the power. So not only do I want you to observe the first part, that is this, look at the entire equation as well. So what I'm trying to show you here is whenever you have x to the power odd plus y to the power odd, do you see हर जगह पे x plus y is outside as a factor, तो ये divide होता है x plus y से always. Take your time, copy this down, comment done.
ये बेटा ये हमेशा नहीं आएगा, दिस विल नॉट ऑलवेज बी देयर। आप अगर पावर 6 कर दोगे, इट विल नॉट बी देयर, दिस विल नॉट बी देयर। You have, let us say, another result, x to the power 6 minus y to the power 6, अभी अलग बन जाएगा थोड़ा सा, x minus y, x plus y, और बाद में ये आ जाएगा आपका। Now for minus sign similar pattern आएगा, देखो for a minus sign let us say x cube minus y cube, x की पावर 5 minus y की पावर 5, x की पावर 7 minus y की पावर 7। पैटर्न आप खाली पैटर्न पकड़ो, very easy to observe the pattern. Original number has minus in the middle, so first bracket is minus, अंदर अब सब पॉजिटिव होगा। यहाँ क्यूब है, it will start from a square. Here power 5 है, it will start from power 4. Here as well, if you want to complete, it will start from power 6. So when we have x to the power odd minus y to the power odd, ये divide होता है x minus y से for sure. लेकिन power even plus power even का we don't have a pattern. इसका पैटर्न हमारे पास कोई नहीं है। पावर ऑड में प्लस माइनस वी हैव अ पैटर्न, पावर इवन में माइनस वी हैव अ पैटर्न, अदरवाइज वी डोंट हैव पैटर्न फॉर इवन एंड पॉजिटिव। इवन प्लस का पैटर्न हमारे पास नहीं है। बेटा x इज इक्वल टू y होगा तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, फॉर 4 नंबर्स ये क्वेश्चन कैट में 2 बार आ चुका है विद डिफरेंट डिजिट्स। देखो फॉर कंसेक्यूटिव स्पेशली कंसेक्यूटिव, जैसे मैंने ले लिया 12 to the power odd, let us say 15, 13 to the power 15, 14 to the power 15 और 15 to the power 15। थोड़ा ध्यान से देखना भी आप लोग। पावर कुड बी एनी ऑड नंबर, पावर कुड बी एनी ऑड नंबर, जब तक सेम है तब तक वी आर ओके। पावर शुड बी ऑड एंड सेम, ऑड एंड सेम। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, if I look at the first and the last, it's a multiple of 27. If I look at the first and the last, it's a multiple of 27. And if you look at this even plus odd, even plus odd, तो 27 का multiple तो है, it is also a even number, it is also a even number, it is also a even number. तो ये जो होगा it will be a multiple of 54. इसका लोगों ने रूल बना दिया है, if there are 4 consecutive numbers which are having the same odd power, तो उन सब का जो एडिशन है उनसे डिवाइड होता है। ये इसको हाईलाइट करो एक बार। बेटा ये इवन ऑड पे आप ध्यान नहीं दे रहे ना बेटा, ये इवन पावर का है, ये दिस इज ओनली फॉर इवन पावर। अगर इवन पावर है
तो एडिशन से भी डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्शन से भी डिवाइड होगा और स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, डिफरेंस से भी। पावर ऑड है, प्लस है, तो ये प्लस से डिवाइड होगा। पावर ऑड है और माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन से डिवाइड होगा। ये 4 कंसेक्यूटिव वाला एक बार आप हाईलाइट कर लो। देयर हैव बीन क्वेश्चंस इन कैट ट्वाइस बेस्ड ऑन दिस। Comment done. We'll move on. Moving on. चलो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, देन कमेंट। What answer do you guys have to offer?
आप ये कह रहे हो a number k is divisible by this, तो k can also divide which of these numbers? कौन से नंबर को k डिवाइड कर सकता है? ये कैसे पता पड़ेगा आपको? हाउ कैन यू फाइंड दिस? k खुद डिवाइड होता है अ सर्टेन नंबर k. अरे k कैन डिवाइड, अरे बाबा k डिवाइड कर सकता है इसको, k डिवाइड कर सकता है इसको, तो k और किसको डिवाइड कर सकता है? अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 कैन डिवाइड 24, ये कंफर्म है आपको, तो और किसको किसको 4 डिवाइड कर सकता है? अगर 24 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी डिवाइड करेगा ना. थिंक ऑन दीज लाइंस, थिंक लाइक दिस. k कैन डिवाइड दिस नंबर, k इसको डिवाइड कर सकता है, तो k और किसको डिवाइड कर सकता है? फ्रॉम द फॉलोइंग. तो जो नंबर इसका मल्टीपल है उसको भी k डिवाइड करेगा. एंड यू सी ये मल्टीपल है. अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 into 12 minus 1, which is also 2 into 12. What I have is 3 का पावर 12 स्क्वायर माइनस 1 का पावर 12 स्क्वायर. तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये किससे डिवाइड होगा? एक्स माइनस वाई से, एक्स प्लस वाई से, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से. तो अगर ये एक्स और ये वाई है तो ये आपका 3 की पावर 12 माइनस 1 से डिवाइड होगा, 3 की पावर 12 प्लस 1 से भी डिवाइड होगा. तो अब देखो अगर k इसको डिवाइड करता है, if k can divide this, k can divide this, तो इसके मल्टीपल को भी k डिवाइड करेगा. आंसर ऑप्शन सी. थिंक केयरफुली एंड लेट मी नो ये समझा क्या आपको? देखो फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट द लार्ज पावर्स, 3 स्क्वायर 12 सब छोड़ो. आप ये कह रहे हो किसी एक नंबर को k डिवाइड कर सकता है, n कुछ भी हो k कुछ भी हो, k कैन डिवाइड n. तो अगर n का कोई मल्टीपल आ गया तो k तो डिवाइड करेगा ना उसको. तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है ये जो आपको गिवन है इन ऑप्शंस में से इस वैल्यू का मल्टीपल कौन है? दैट्स ऑल. इफ आई रीराइट दिस एज, देखो 3 की पावर 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इफ आई डू दैट तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये डिवाइड होगा ना इनसे. तो अगर ये नंबर इससे डिवाइड होता है, ये नंबर k से डिवाइड होता है, तो ये भी k से डिवाइड होगा. जैसे कि लेट अस से 20 इज डिविजिबल बाय 4,
तो बेटा 80 भी तो होगा डिविजिबल बाय 4, 60 भी तो होगा डिविजिबल बाय 4। अगर 20 के ही मल्टीपल्स हैं, 20 खुद 4 से डिविजिबल है, तो बाकी मल्टीपल्स भी डिविजिबल होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Moving on. Try this. ये easier than the last few questions. आप ये कह रहे हो this is always divisible by for every odd positive integer n. ये odd और positive है, x की पावर odd
और y की पावर ऑड, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस y से। इस केस में x और y क्या है, 20 एंड 8, 28, तो हमेशा 48 से डिवाइड होगा। इट इज ऑलवेज डिविजिबल 48। और 48 खुद किससे डिवाइड होता है, 16 से और 24 से। तो अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड होता है तो जाहिर सी बात है 16 और 24 से भी होगा। कोई नंबर अगर 20 से डिवाइड हो गया तो 20 के अपने डिवाइजर क्या होते हैं, 2 होता है, 10 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो अगर कोई नंबर 20 से डिवाइड हुआ तो इन सबसे भी होगा। It will be divisible by all those values. Going on. Yellow. Which of the following is not a factor where 4 to the power 6n minus 6 to the power 4n, where n is a natural number? Which of the following is not a factor? इनमें से कौन सा इसका फैक्टर नहीं है? That is the question. देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यू नीड टू थिंक एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। या तो इवन पावर आ जाए लेकिन सेम होना चाहिए, या तो ऑड पावर आ जाए लेकिन पावर सेम होगा, देन ओनली द कॉन्सेप्ट वर्क्स। तो यहां पर इफ आई रीराइट दिस एज 4 टू द पावर 3 into 2n minus 6 to the power 2 into 2n, इससे मुझे क्या हासिल होगा, 4 क्यूब 64 पावर 2n। यहाँ क्या बन जाएगा, 36 पावर 2n। Now what I have is x की पावर even minus y की पावर even. Now this becomes divisible by x minus y and x plus y. So what is x plus y? X plus y is 100. X plus y is 100. What is x minus y? X minus y is 28. तो ये जो नंबर है ये 28 से भी डिवाइड होगा और 100 से भी डिवाइड होगा। तो डिवाइड 28 से होगा तो 14 से भी होगा, 100 से डिवाइड होगा तो 10 से भी होगा, 25 से भी होगा। क्वेश्चन था नॉट अ डिवाइजर, नॉट अ फैक्टर। ये तो सारे फैक्टर्स हैं। द आंसर वुड बी डी।
द क्वेश्चन वाज इनमें से कौन सा वैल्यू डिवाइजर नहीं है? Confirmation on this? Moving on. Very good. चलो, try this. अब आप बोलोगे वही, सर थ्योरी में आपने कराया एडिशन ऑफ ए बी सी डी टू द पावर सेम थिंग इज डिविजिबल बाय ए बी सी डी, और क्वेश्चन में क्या कर दिया, वन ऑफ द साइंस इज नेगेटिव. चलो ट्राई. n is a positive odd integer, then ये डेफिनेटली किससे डिवाइड होगा? दिस इज नेसेसरीली डिविजिबल बाय व्हाट? इसमें अभी कुछ देर पहले एक मजाक उड़ा रहा था हैक का कि पेंसिल लेके चला जाओ एलआरडी ये क्रैक हो जाएगा, वैसे ही एक हैक है 1 2 3 रख के देख लो. जैसे आपने इसमें 1 रखा, आपने जैसे इसमें 1 रखा, 17 माइनस 21 माइनस 40 माइनस 45 प्लस 49 इज 0. तो 0 तो हर चीज से डिवाइड होता है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. 0 इज यूनिवर्सली डिविजिबल. तो कोई हेल्प नहीं मिली. अब आप 3 रख के देखोगे, इफ यू वांट टू थिंक लाइक दैट, आप n इज इक्वल टू 3 रख के देखोगे तो इट्स अ वेरी लार्ज कैलकुलेशन. बड़े बड़े नंबर आएंगे, 45 का क्यूब, 49 का क्यूब विल बी समथिंग इन दिस रेंज, 2276 ऐसा कुछ आएगा बड़ा, 2000 2500. लेट मी यूज अ कैलकुलेटर. 22,000 22176. अब इसके डिवाइजर कौन निकालेगा? तो ये गलत कर रहे हो आप. डोंट डू दिस. लुक एट पैटर्न्स. देखो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 17 एंड 49? क्योंकि देखो पावर ऑड है, मैं फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान दे रहा हूं. फर्स्ट एंड लास्ट. 17 to the power odd plus 49 to the power odd will be divisible by 17 plus 49, which is 63. It's a multiple of 63. Similarly, अगर आप बीच वाले नंबर्स को देखो, 66 का मल्टीपल है, 66 का मल्टीपल है. बीच के नंबर को देखो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 21 की पावर ऑड, 45 की पावर ऑड, माइनस कॉमन रहेगा.
ये ए और ये बी, ए की पावर और बी की पावर और एडिशन है 66। तो दो दो के पेयर अगर आपने बनाए तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 66। यहाँ पे तो ऑप्शन में देयर इज नो 66, कहीं है ही नहीं 66। और ध्यान दो, अब मैं पेयरिंग थोड़े अलग ढंग से कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। मैं पेयरिंग कर रहा हूँ फर्स्ट टू की और लास्ट टू की पेयरिंग। तो दिस इज 17 टू द पावर ऑड माइनस 21 टू द पावर ऑड। आपको चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट इज x माइनस वाई? 4। तो ये 4 का मल्टीपल है, भले नेगेटिव मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। सिमिलरली 49 टू द पावर ऑड माइनस 45 टू द पावर ऑड, ये 4 का मल्टीपल है। तो पहले वाले केस में 66 का मल्टीपल, दूसरे वाले केस में 4 का मल्टीपल, और वो भी अलग अलग पेयर से, तो आपका मल्टीपल बन जाएगा 66 इंटू 4। जो पेयर्स बनाए गए हैं उनका, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, आइदर द एडिशन शुड बी सेम, तो आप कॉमन ले सकते हो, और द डिफरेंस शुड बी सेम, ताकि आप कॉमन ले पाओ। जैसे जो वैल्यू आई थी मेरे पास 22176 वाज द ओवरऑल वैल्यू, 22176। मैं डिवाइड कर लेता हूं उसको इससे। यस, इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 264। आप अगर क्यूब कर लेते हो विथ हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर, माइनस करके आपस में डिवाइड कर दो, आंसर मिल चुका है आपको। क्लियर है? कमेंट कंफर्मेशन। Try this. You have 10 seconds.
ये एक्चुअल में कैट का एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। a टू द पावर ऑड, b टू द पावर ऑड, ये डिविजिबल होगा a प्लस b से, विच इज 38। तो अगर ये 38 से डिविजिबल है तो ये 19 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर इज 0। That is why in CAT you have already seen similar 4-5 questions, you have understood the method। ये बड़े आसान सवाल हैं। ये मैंने आपको एज अ थियोरी करवाया। When there are 4 consecutive numbers, power is odd, power must be odd, power 3 हो चाहे 5 हो, सेम होनी चाहिए। It is divisible by addition of the numbers। इसके लिए consecutive होना जरूरी है। इनका एडिशन 35 प्लस 35 70, तो ये 70 के मल्टीपल्स हैं, तो रिमाइंडर बाय 70 वुड बी, numbers must be consecutive, first thing, powers must be odd। तो आपके मन में अगर सर अगर नहीं है तो क्या होगा, then we apply remainder concept। अभी रिमाइंडर से कहूंगा मैं आपको in some time। we'll see approach for remainders, we'll see methods for remainders। Try this। इस केस में भी you have a calculator in the exam, go ahead with this, कंप्लीट कर दो कैलकुलेटर से, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। यू कैन डू दिस विद कैलकुलेटर एज वेल इन द एग्जाम। अदरवाइज इफ यू नोटिस 55 प्लस 17 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा लग रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कभी भी तीन नंबरों का एडिशन 0 तभी होगा व्हेन वन ऑफ देम, मिनिमम वन ऑफ देम इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो आपका सी नेगेटिव है। तो डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला?
when addition of three terms is 0, addition of their cubes must be equal to 3 times of their products. ये हमने एल्जेब्रा में देखा, डेरिवेशन में देखा है इसका, हमने इसका फुल फॉर्म फुल एक्सपेंशन में देखा है. सो हियर दिस इज ए, दिस इज बी. अब मैं इसको प्लस करूंगा तो सी ये बन जाएगा, सी इज -72. तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किससे डिवाइड होगा? 3 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सी. ध्यान देना सी इज नेगेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा. 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू व्हाट इज 72, 8 इंटू 9. अब देख लो इनमें से क्या क्या अवेलेबल है. इज 13 अवेलेबल? नो. 17 है. ये 17 तो अवेलेबल है, बट 7 अवेलेबल है? नो. 3 and 17 दोनों अवेलेबल हैं? यस. इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3 and 17. तो जो फॉर्मूला है उस पर एक बार ध्यान देना. a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc only or if only the addition of numbers is 0. Confirmation on this? Others confirm? Give it a shot. Same question I had shared in your WhatsApp group and on a couple of Telegram groups as well. A and B are natural numbers up to and including 100. मतलब A का रेंज 1 से लेके 100 तक है,
बी का रेंज 1 से लेके 100 तक है। वी आर सेइंग ये जो नंबर बनेगा 3 की पावर ए प्लस 3 की पावर बी, ये 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से तब डिवाइड होगा जब यूनिट डिजिट 0 बनेगा। इन दैट केस हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर ए बी, क्योंकि ए और बी के नाम गिवन है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये डिफरेंट पेयर्स हैं, देयर आर 2 पेयर्स। दिस इज कॉल्ड अ केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, सीक्वेंस मैटर्स। अब 3 की अगर बात करें, यू रिमेंबर 3 की पावर 1, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9, जब जब ये 3 की पावर 4 के प्लस 1 होगा, डिजिट विल बी 3। वैसे ही जब जब ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 3 की पावर 10 होगा, विच इज 3 की पावर 4 के प्लस 2, ये हर बार 9 होगा। 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 3 क्यूब कॉमा 3 to the power 7, 3 to the power 11, जब जब ऐसा होगा it will be always 3 to the power 4k plus 3, just 27। आखिरी में क्या आएगा 7, 3 to the power 4, 3 to the power 8, 3 to the power 12, जब भी 3 का पावर 4k होगा it will always be 1। तो आपको ध्यान देना है जीरो कहां बनता है। कैन आई से adding this and this generates a zero। अगर जो a है, ध्यान से मैं एक assumption लेता हूं, अगर a 4k plus 1 है तो b को 4k plus 3 होना पड़ेगा। लेकिन अगर a और b इंटरचेंज हो जाए तो भी सेम पॉसिबिलिटी है। अब 4k plus 1 वाले नंबर होते कितने हैं? ऐसे नंबर 1, 5, 9 वाले नंबर होंगे कितने? 25 नंबर होंगे। a के 25 वैल्यू पॉसिबल है, b के भी 25 वैल्यू पॉसिबल है, तो टोटल 625 वैल्यूज पॉसिबल हैं ए और बी के पेयरिंग के। यहाँ आपने 5 ले लिया, यहाँ आपने 3 ले लिया, 0 बन जाएगा। यहाँ आपने 1 ले लिया, यहाँ आपने 11 ले लिया, 0 बन जाएगा। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, 25 पावर्स हैं। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, 25 पावर्स हैं। कैन आई इंटरचेंज ए एंड बी? मैं ए और बी को इंटरचेंज कर सकता हूँ। यस, मैंने इनको ए ले लिया, इनको बी ले लिया, इनको ए ले लिया, इनको बी ले लिया, ऑल ऑफ दीज आर फाइन। सिमिलरली ये भी सिमेट्रिक है, ऐसे 25 नंबर होंगे और ऐसे 25 नंबर होंगे, तो आपका आंसर फिर से आएगा 2 into 25 into 25, 625 into 2, 150, दोनों का एडिशन फाइनली देयर आर 2500 पेयर्स। 2500 पेयर्स होंगे आपके पास ए और बी के लिए। 2500 पेयर्स आर देयर फॉर ए एंड बी। कॉन्सेप्ट वही है, देयर इज अ साइकिल ऑफ 4k, 4k plus 1, 4k plus 2 का साइकिल है। Take your time, confirm this.
Moving on. Now we'll be starting with remainders. तो वो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, न्यूमरेटर, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. कभी आपके सामने ऐसा आ जाए, यू हैव टू डिवाइड लेट अस से 29 बाय लेट अस से 4. 7 times I can divide 28, remainder is 1. So how can I write 29? I can write the number itself as quotient. This is quotient, this is remainder, this is the divisor. The number can be written as quotient into divisor plus remainder. N is equal to Q into D plus R. The general notation of any number with divisor, quotient and remainder. If I divide, let us say larger numbers, let us say I want to divide 128 by, let us say 11. 11 into 1, 11, 1, 8, 1 times 11, remainder is 7. So I can write 128 as 11 into 11 plus 7. Quotient, divisor, remainder is equal to n. So basic relation between n, d and r. अब यहाँ थोड़ा एक observation आप लो. Let me take a slightly larger number. Let us say I'm going to divide 323 by, let us say 20. 1 times, observe, 1 times 20, 123, 6 times 120, remainder is 3. Listen to this. The number is 20 into 16 plus 3. कल को if I want to divide the number n by let us say 4, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 का मल्टीपल है, इट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, तो रिमाइंडर कहां से आएगा? 3 से आएगा. सो रिमाइंडर हियर विल बी 3. इफ आई वाज टू डिवाइड द नंबर n बाय लेट अस से 5, क्योंकि ये 20 का मल्टीपल प्लस 3 है, so the number is already a multiple of 5 plus 3. What I am trying to teach you or show you here is, आपने एक बार रिमाइंडर निकाल दिया. Once you find out the remainder, आप डिवाइजर के भी डिवाइजर यूज कर सकते हो. What was the divisor here? 20. The number n divided by 20 gave me a remainder 3. तो 20 का डिवाइजर 4, 4 से रिमाइंडर 3. 20 का डिवाइजर 5, 5 से रिमाइंडर 3. बट संभल के, if I was to divide the number n by 2, ये 2 का मल्टीपल है. This is a multiple of 2. Yes. लेकिन 3 is more than 2. जब डिवाइजर छोटा हो जाए रिमाइंडर से, तो हमें और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा. So take your time. Left side we all know, we are all aware of this. Right side में थोड़ा कुछ नया मिल रहा है आपको. So write this down, highlight this and comment that. डिवाइजर का भी अगर डिवाइजर आ जाए, in that case remainder remains the same.
Once you understand this, comment done. Guys, comment done. Moving on from this. So now I'll try to explain you the concept of negative reminders, how it is useful, when it is useful. तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ पेयर. If somebody asks me what is the remainder of, let us say 39 divided by 11. So we know 33 is a multiple, remainder is 6. When I divide 39 by 11, I go up to 3 times 33, remainder is 6. If I divide 39 by 11 and I go to the just next multiple, remainder could have been used as -5 also. We'll go into details of this, don't worry. If somebody says find the remainder for 33 divided by 7, what I can say is 33 divided by 7, 4 times 28, remainder would be 5. If I go just to the next multiple, just above, 5 times 35, I could use remainder -2 also. If I had a large number, let us say 223 divided by, let us say 13, something like this, divided by 13, and I need a remainder. So 223 divided by 13, 1 times 13, 93, 7 times 91, remainder is 2. Can you guys guess what will be the next remainder? Can you guys guess and comment what will be the next remainder, adjacent remainder? Basically, are you able to see any kind of pattern between positive and negative? If you do not look at the sign, don't look at the sign. 6 plus 5 is 11. 5 plus 2 is 7. So what should I add with 2 to generate 13? I should add 11. One of them is positive, the other will be negative. So positive and negative remainders always appear in pairs. क्यों मैं सब करवा रहा हूँ? In some cases, not all, some cases, negative remainders help us in solving questions faster. जैसे ये question आपके सामने आ जाता, ये वाला. What will be easier for you? मैं इसी का example create कर रहा हूँ. What will be easier for you? 5 का power 10 calculate करना is easier और -2 का power 10 करना is easier. Otherwise इसमें तो उल्टा पड़ रहा है. Negative number और बड़ा हो गया magnitude. Negative number, positive numbers are almost same. Let us say in some number when divided by 20, remainder is 18. तो 18 की पावर 20 करना इजी होगा या -2 की पावर 20 करना इजी होगा. So negative remainders are a concept. They are used to decrease the amount of calculation, but the final answer can never be negative. मैं आपको examples दिखाऊंगा अभी, don't worry. I'm introducing a concept of negative remainder.
First things first, negative and positive remainders always appear in pairs. Never mark negative as your final answer. Negative remainder एक्चुअल में कुछ नहीं होता, it's a concept. कल को अगर आप किसी नंबर n को डिवाइड कर रहे हो, लेट अस से विथ 120, और आपका रिमाइंडर आ गया 112, 112 से क्या पेयर होगा? -8. दोनों का एडिशन शुड बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर और द डिवाइजर. If you don't look at the minus sign, the addition of both remainders must be equal to the divisor or the denominator. Never mark final answer as negative. As it is mentioned करो, write down these 3-4 examples. Write down the reason. जो right side में yellow में लिखा हुआ है, right side में yellow में, if you see here, this part, this yellow part is the reason behind it. Others confirm done. We can move on to the next application of this. तो नेगेटिव रिमाइंडर्स कभी आंसर में नहीं लगाना है. मान लो आप किसी नंबर को 28 से डिवाइड कर रहे हो और सॉल्व करते करते रिमाइंडर -3 आ गया. डोंट लुक एट -3 में क्या ऐड करेंगे टू मेक 28? 25. तो आपको आंसर में हमेशा पॉजिटिव मार्क करना है. नेगेटिव रिमाइंडर इज अ कॉन्सेप्चुअल वैल्यू. इट कैन बी यूज्ड intermediately for calculations. Answers must always be positive. अब ये बेसिक सा रूल है. I will do this with examples with values. कोई मुझसे कह दे कि 123 plus 221 plus 332 plus 179, इन सबको डिवाइड करके हमें रिमाइंडर चाहिए 7 से. तो जनरल टाइम में आप क्या करेंगे? व्हेन यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर राइटिंग एवरीथिंग, 9 plus 2 11 plus 1 12, 12 plus 3 15, carried over 1 8, 11 13 15, carried over 1 2 5 7, 7 and 1 8. इसको आप 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालना शुरू कर दोगे. दैट इज द नॉर्मल अप्रोच. 855 divided by 7, 1 times 7, 15, 2 times 14, 15, 2 times 14, remainder 1. मैं आपको ये बताना और सिखाना चाहता हूं कि आप इतने बड़े नंबर्स को प्लस करके लार्जर वैल्यू बनाओगे, फिर डिवाइड करोगे. ये करने से अच्छा
don't look at the mathematical operation here. आप इनका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, इनका और इनका रिमाइंडर निकालो आपस में, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है. 119 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये 4 ज्यादा है. आपको पता है 210 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 210. तो 224 विल बी मल्टीपल, ये उससे 3 कम है. आई कैन यूज नेगेटिव रिमाइंडर. अभी देखो यहाँ पे, डू यू अंडरस्टैंड, 280 is a multiple of 7, 42 is a multiple, तो 322 is a multiple, 322 is a multiple, 322 is a multiple, plus 7 plus 3, तो remainder here is plus 3. अब यहाँ पे देखें, can I say 140 is a multiple of 7 plus 35 is a multiple of 7, तो 175 is a multiple of 7, बच गया 4 divided by 7. क्योंकि सबका एडिशन था, एडिशन कर दो, ये और ये कैंसिल, बच गया 8, 8 upon 7, 8 upon 7, the remainder is 1. What we are trying to tell you or show you here is, आप उनका सम हो चाहे प्रोडक्ट हो, एक्चुअल नंबर्स मत यूज करो, उनके रिमाइंडर्स यूज करो. जैसे छोटे स्केल पे अगर यही होता, इफ आई हैड 123 into 332 upon 7 और मुझसे कहा जाता फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये तो 300 into 100 मतलब 30,000 की भी आगे चली गई. इतने बड़े नंबर कौन निकाले? तो इनका और इनका रिमाइंडर क्या था आपस में? रिमाइंडर वाज 4. इनका आपस में रिमाइंडर वाज 4 और इनका रिमाइंडर क्या था आपस में? रिमाइंडर वाज 3. 12 upon 7, रिमाइंडर इज 5. आप नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करो, उनके जो रिमाइंडर्स हैं ए और बी के, उनको मल्टीप्लाई करो. तो बीच में ऑपरेटर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, वो उनके रिमाइंडर्स में लगा हो. जैसे इफ यू हैव ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई सी, आपको अगर किसी से रिमाइंडर निकालना है तो आप क्या करो, इनके अपने रिमाइंडर निकाल दो, ए का रिमाइंडर निकाल दो, बी का रिमाइंडर निकाल दो, सी का रिमाइंडर, जो प्लस माइनस उसे रहने दो आप. प्लस माइनस मल्टीप्लाई अपॉन डी, ये आपको आंसर सेम देगा. डोंट मल्टीप्लाई, डिवाइड. Guys, comment down.
चलो मूविंग ऑन। अब ये पावर साइकिल और रिमाइंडर्स क्या है? जैसे आपको यूनिट डिजिट निकालना था, इट वाज ऑलवेज फिक्स्ड, डिजिट कोई भी हो, जनरली स्पीकिंग 4k का साइकिल था, साइकिल वाज फिक्स्ड। ये क्यों था ये भी हम डिस्कस करेंगे, 4 पे ही फिक्स है वो, दैट विल डिस्कस। बट फिलहाल रिमाइंडर्स में हर एक क्वेश्चन में अलग साइकिल हो सकता है। लाइक इफ आई create a small example, let us say 33 to the power 122 divided by 7। कोई मुझसे कह दे इनका रिमाइंडर निकालो, तो वी हैव टू क्रिएट साइकिल। आई विल राइट डाउन एवरीथिंग इन डिटेल, फिर जो चीज काम की नहीं है आई विल क्रॉस इट ऑफ, यू फोकस ऑन द यूजफुल स्टफ। व्हाट डज द न्यूमरेटर मीन? इट इज 33 into 33 into 33 into 33 122 times divided by 7। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहा था मल्टीप्लाई मत करो, लुक एट रिमाइंडर्स। व्हाट इज 33 डिवाइडेड बाय 7? 28 डिविजिबल है, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5। हाउ मेनी टाइम्स? 122 times। So remainder is 122 times 5, which is 5 to the power 122। Now, is there a way for me to save this time? I want to remove these steps। पावर पे आप ध्यान मत दो, इन दोनों का आपस में रिमाइंडर क्या है? 33 और 7 का रिमाइंडर आपस में दैट इज 5। सीधा 5 लिख के पावर मेंटेन कर दो, तो आपके दो स्टेप बच गए। For the first time I am showing you expansion, for the first time we are solving such questions, तो हम डिटेल में बना रहे हैं, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू सो मच कैलकुलेशन, इतना सब आपको नहीं करना पड़ेगा। देखो अब इसकी साइकिल ढूंढनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। 5 to the power 1/7, रिमाइंडर 5। व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25, 25/7, 25 डिवाइड होगा, 21 डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 4। अब जब आपको क्यूब चाहिए, लैंग्वेज सुनना, 5 क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है। कैन आई से इनको और इनको मल्टीप्लाई करके आई कैन क्रिएट 5 क्यूब। तो हम इनको मल्टीप्लाई करने के वजह हम रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into 7, 5 into 4 20, 5 into 4 20/7, रिमाइंडर इज 6। कंटिन्यू करते हैं। आपको 5 की पावर 4 का रिमाइंडर चाहिए, साइकिल को मैन्युअली निकालना पड़ता है। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई लास्ट। देखा आपने ये पहले किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, पावर 4 बनेगा, तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई करो। 6 into 5 30, 30/7, रिमाइंडर 2। आपको 5 की पावर 5 का रिमाइंडर चाहिए। देखो सिंपल लॉजिक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट रिमाइंडर 5, लास्ट रिमाइंडर 2, 5 into 2 10, 10/7, रिमाइंडर 3। 5 की पावर 6 का रिमाइंडर चाहिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई लास्ट। 3 into 5 15, 15/7, रिमाइंडर 1। इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीट साइकिल। एक बार आपका रिमाइंडर 1 आ गया ना, अब अगर आपको रिमाइंडर और कंटिन्यू करना है, आपको रिमाइंडर चाहिए 5 की पावर 7/7 का, तो ये करोगे ना मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। तो डू यू सी रिमाइंडर इज रिपीटिंग नाउ, रिमाइंडर इज रिपीटिंग नाउ। तो इस वाली पावर में और इसमें कितना गैप है? 6 का। ये जो पावर होती है जिसमें रिमाइंडर 1 आता है, इसको बोलते हैं साइकिल। ये डिराइव करना पड़ता है, इसका एक फॉर्मूला भी आगे सिखाऊंगा, बट पहले डेरिवेशन से सीखो। तो 6 का साइकिल आपको करना ये है, इसको 6 6 में ब्रेक करो। ये वाली पावर को 122 को
ब्रेक इन 6 कितनी बार ब्रेक होगा? 20 टाइम्स। कितना बच गया? +2, तो 5² / 7। अब ये फायदा होता है साइकिल का, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड /7 हमेशा रिमाइंडर 1 देगा। 5 की पावर 6/7 रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, ये हमेशा 1 होगा। तो 1 × 25/7, 1 × 25/7 इज 4। ये आपका आंसर है। तो मैं एक बार हाईलाइट करता हूं यहाँ पे, ये जो व्हाइट कलर में मैंने इधर हाईलाइट किया ना बेटा, ये डेरिवेशन है, ये साइक्लिसिटी का डेरिवेशन है। दिस इज डेरिवेशन फॉर साइक्लिसिटी, कि रिमाइंडर 1 कब आएगा या फिर रिमाइंडर रिपीट कब होगा। रिमाइंडर 7 पे रिपीट हुआ, 7 - 1, द साइकिल इज 6। आराम से इसको लिखो, मैं आपको आगे इसके फॉर्मूले भी सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट साइकिल इन 2 स्टेप्स। You are seeing something for the first time. अब 6 में क्यों ब्रेक किया हमने पावर को? क्योंकि हमें पता है 6 के बाद बार बार रिपीट करेगा और पावर 6 होते रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 6 के फॉर्म में ही ब्रेक करना है, साइकिल के फॉर्म में ही ब्रेक करना है आपको पावर को। Comment done for this. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एक एक क्वेश्चन में 5-5 एग्जाम्पल्स हैं। एंड माय एक्सपीरियंस इज, मैंने जितने भी रिमाइंडर्स के क्वेश्चन देखे हैं कैट में, इन मैक्सिमम केसेस द डिनोमिनेटर इटसेल्फ इज प्राइम। डिनोमिनेटर ही प्राइम है वहां पे। चलो, now here let us use a different denominator, let us use same denominator, different numerator। यहाँ पे साइकिल कब आया था? 6 पे आया था। कई लोग यहाँ पे भी रोक देते हैं, कई लोग यहाँ पे भी रोक देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर -1 है, तो -1 का पावर हैंडल करना बड़ा इजी होता है। तो यू कैन स्टॉप अगर रिमाइंडर -1 आ गया तो भी। अगर ऐसा आपके सामने आ जाए, लेट अस से
23 टू द पावर 333 और आपसे बोला जाए रिमाइंडर निकाल के दो। सीधा एक ही स्टेप में 23 का रिमाइंडर बाय 7 इज 2 टू द पावर 333 अपॉन 7। अब इतना छोटा नंबर है, आपको कोई 2 का पावर पता है क्या जो 7 के बहुत नजदीक है? 2 क्यूब इज 7 इंटू 1 प्लस 1। तो सीधा पता पड़ गया ना, 2 क्यूब पे ही सीधा साइकिल आ गई। अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है ऐसे अप्रोक्सीमेटली देख लो आप, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 1। तो क्यूब इज द साइकिल। क्या ये क्यूब का मल्टीपल है? इज इट अ मल्टीपल ऑफ 3? यस। साइकिल कंप्लीट, रिमाइंडर 1, खत्म। इफ दिस वाज 23 टू द पावर 335 अपॉन 7, क्या आता? 2 टू द पावर 335 अपॉन 7। अभी साइकिल कितने की है? 3 की। लैंग्वेज पे आप ध्यान देना। ऑल आई एम डूइंग इज आई एम री राइटिंग दिस। 3 का कौन सा मल्टीपल है इसके नजदीक? 333। एक्स्ट्रा कितना है? 2। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना, दैट बिकम्स द पावर। अब इनका रिमाइंडर तो 1 है। व्हेनेवर देयर इज अ क्यूब, इनका रिमाइंडर तो 1 है, तो आपका आंसर यहां से आएगा 4 इंटू 1 4। दैट इज योर रिमाइंडर। कॉपी दिस डाउन। अभी साइकिल 3 का आया, इससे पहले साइकिल 6 का आया था। तो डिनोमिनेटर डिसाइड साइकिल कितना आएगा। व्हाट विल बी द साइकिल? डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए, 7 की जगह 17 हो जाए, साइकिल कैन गो अप टू 16। Denominator decides how large will the cycle be. How far can the cycle go? Denominator अगर कहीं पे 20 आ जाए तो साइकिल अकॉर्डिंगली उतनी बड़ी होती जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, a to the power b divided by c find remainder, ये इनके 3 मेजर तरीके हैं बनाने के। अभी आपने देखा साइकिल को डिराइव करके। दूसरा है ऑयलर्स मेथड, यूलर बोलते हैं लोग, इट्स नॉट यूलर, इट्स ऑयलर। और तीसरा है फर्मैट्स। ये 3 बेसिक तरीके हैं। और फिर इनके ऊपर हम चाइनीज रिमाइंडर लगा सकते हैं, रिवर्स रिमाइंडर लगा सकते हैं, और बहुत तरीके हो सकते हैं इसके ऊपर में। बट 3 फंडामेंटल है। रिमाइंडर का साइकिल निकालना खुद से निकाल लो, ऑयलर मेथड साइकिल निकालना, फॉर्मेट मेथड साइकिल निकालना। डन, बोथ एग्जांपल्स आर क्लियर। गाइस, अभी फॉर्मेट चाचा बहुत ही अच्छे इंसान थे। इट्स कॉल्ड फॉर्मेट्स लिटिल रूम। अब कोई कहता है इन्होंने ऑयलर से कॉपी किया, कोई कहता है ऑयलर ने इनसे कॉपी किया। आई डोंट इवन नो कौन से एरा के लोग हैं, विच ईयर डिड दे were they born or they died, so I can't say who copied from him whom. इन्होंने ये कहा, अगर आपका डिनोमिनेटर प्राइम है, ऊपर नंबर कुछ भी हो, डिवाइड नहीं होना चाहिए, ऊपर नंबर कुछ भी हो,
द साइकिल इज ऑलवेज प्राइम -1। हम साइकिल किसे कहते हैं? रिमाइंडर 1 को बोलते हैं साइकिल। तो कल को अगर आपका डिनोमिनेटर 7 है तो पावर 6 पे रिमाइंडर 1 आएगा ही आएगा। अब यहां देखो आप, अगर पावर 3 पे रिमाइंडर 1 आ गया तो बेटा 3 का स्क्वायर भी कर दोगे तो 1 का ही तो स्क्वायर कर रहे हो ना। तो फॉर्मेट ने कहा कि ये तो होना ही होना है, इसके नीचे है कि नहीं मेरे को नहीं पता। जैसे आपका अगर डिनोमिनेटर आ गया 11, एनी नंबर टू द पावर 10 रिमाइंडर हैज टू बी 1। नीचे डिनोमिनेटर आ गया 13, विथ पावर 12 रिमाइंडर हैज टू बी 1। ये फॉर्मेट ने कहा फॉर अ प्राइम डिनोमिनेटर 1 लेस इज द साइकिल। फॉर अ प्राइम डिनोमिनेटर 1 लेस इज अ साइकिल। अब ये मत कहना नीचे 9 है तो उसका साइकिल 8 है। 9 प्राइम है क्या? Fermat's little theorem is for prime numbers. Denominator is prime, 1 less is the cycle. अब ये क्वेश्चन कैट में आ रखा है, देखो 2 to the power 256 upon 17। अभी पेन मत चलाओ आप। 17 का साइकिल क्या होगा? 16। क्या ये 16 का मल्टीपल है? यस। रिमाइंडर 1 खत्म। 30 सेकेंड में क्वेश्चन बन गया आपका। तो ये स्पेशलाइज नॉलेज है, ये क्लास में कवर ही नहीं होगा तो हाउ विल यू अप्लाई दिस इन द एग्जाम? क्लास में कवर करने वाले को तो आना चाहिए ये सब। जैसे आपने सुना होगा ना, एक किताब पढ़ने वाला बहुत चिल्लाता है, हो हल्ला करता है। 10 किताब वाला हाँ देख लेंगे हो जाएगा। Jot this down, copy this down. डन। वेरी सिंपल थ्योरम, कोई हाईफाई नहीं है। एप्लीकेशन मैंने दिखाई दी आपको, देखो ये एप्लीकेशन ही है और क्या। कल को आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 13 to the power 223 upon 11 रिमाइंडर बताओ। अपॉन 11 upon 11 फाइंड द रिमाइंडर। यू हैव सम क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। सबसे पहले तो इनका रिमाइंडर आपस में क्या आएगा? 2। फिर 11 की साइकिल क्या होगी? 11 की साइकिल होगी 10। आपको सिर्फ ये करना है, ये 10 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है। देखो 220 प्लस 3 है ना बेटा, ये आपको आंसर देगा। साइकिल के बाद व्हाट इज देयर? रिमाइंडर इज 8। वर्बली बनेंगी चीजें आपसे। मान लो डिनोमिनेटर लार्ज भी है, लेट अस से डिनोमिनेटर इज फेयरली लार्ज, 19 इज अ डिनोमिनेटर, तो ना पावर उसके आसपास दी जाती है। लाइक 19 into 5 is 95, तो आपको ना किसी नंबर का ऐसे पावर दे देंगे deliberately, let us say 16 to the power 99। चलो solve, take a minute, solve। and comment your answers।
Very good. Other people, try, comment your answers. What is going on? Participate, guys. तो देखो, पहली बार मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर अप्लाई करके दिखा रहा हूं। 16 डिवाइड होता नहीं है, 3 नंबर पीछे, तो रिमाइंडर इज -3। अभी 19 -1, 18 is the cycle, 18 is the cycle। तो इसको 18 के फॉर्म में ब्रेक करना है। कैन आई से दैट इज 18 into 5 90, 90। उसके बाद क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो this 9 is the, this 9 will give you the answer, -3 to the power 9 divided by 19। अब यार देखो, ये माइनस को आप बाहर निकाल दो, ऊपर ऑड है ना, ऊपर ऑड है पावर, नीचे माइनस है, माइनस को बाहर निकाल दो। अभी क्या बच गया? 3 की पावर 9। सुनना, 3 की पावर 9, कैन राइट दिस लाइक दिस, कैन राइट इट लाइक दिस, 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब। ये क्या है? 27 27 27। तो 27 को अगर आप डिवाइड करोगे 19 से अलग 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 अलग, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 8 8। करना पड़ेगा, एफर्ट लगेगी लगेगी, ब्रेक करना ही पड़ेगा अब आपको। अब आप या तो कैलकुलेटर यूज करो या फिर अभी भी मेहनत करो। 8 8 is 512, 512 divided by 19, 2 times 38, 132। 5 times this is 95, 6 times this is 4, 114 plus 19, 133, 133 is a multiple, 7 times it is 133, 133। तो रिमाइंडर -1। अब इनका रिमाइंडर -1 है और सामने एक -1 है, -1 into -1 +1। कंफर्म करो। ये आप लोगों ने इतने सारे एप्लीकेशन एक साथ देख लिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्लोली एक एक करके, आपको चाहिए तो 3 का और कोई पावर ले लो, 3 का पावर 4 ले लो, 81 into 81 into 3 ले लो, टोटली अप टू यू। मैंने क्या किया? 27 27 27 ले लिया। व्हाट आई हैव इज, मैं खुद आपके लिए आंसर वेरीफाई कर देता हूं, 16 to the power 19, 16 to the power 99। Result is 1, absolutely। See, I have sent the answer to your WhatsApp group। नहीं बेटा, नहीं है, वो बाहर वाला माइनस भूल गए हो आप। जो बाहर एक माइनस लगा हुआ है ना, ये जो बाहर एक माइनस लगा हुआ है, ये वाला माइनस देखो, आई एम पुटिंग द एरो देयर, तो -18 आएगा तो +1 बन जाएगा। नाउ कैट एग्जाम में तो आपके पास वुल्फ्राइम अल्फा होगा नहीं, तो इन दैट आल्सो आई कैन टीच यू वन ट्रिक। देखो, आई विल ऐड एक्स्ट्रा स्क्रीन। हम कहां पर फंस गए थे? हम फंस गए थे 8 into 8 into 8 upon 19। हमें इसका रिमाइंडर निकालने नहीं आ रहा था। तो व्हाट यू डू इज, माइनस साइन बाद में लगा लेना, डोंट वरी। अगर बड़े बड़े नंबर आते हैं ना और रिमाइंडर निकालना है, तो इन दैट केस यू यूज डिविजन। 8 into 8 into 8, 512 divided by 19, 512 divided by 19। जब इनको डिवाइड करोगे ना एक्चुअल में, तो ऐसा हो जाएगा 26.9473, ऐसा लिखा आएगा स्क्रीन पे। आप कुछ नहीं करना है, आप 26 माइनस कर दो उसमें से,
तो डेसिमल बच जाएगा स्क्रीन पे, आपको लिखना भी नहीं है, इट विल ऑल बी ऑन स्क्रीन, डोंट वरी। अब इसको 19 लगा दो। तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर ऑन स्क्रीन। जो मैं कर रहा था ना, ऐसा ऐसा 512 लिख के फिर मैं टेबल याद, ये सब मत करो ना, ऐसा कर लो। आपको याद है आपने यश यू हैड शेयर्ड वन क्वेश्चन जिसमें 320 AB, हमें इसे 35 का मल्टीपल बनाना था, 35 का। AB मस्ट बी मैक्सिमम। तो आप क्या करो, यू यूज योर कैलकुलेटर एंड व्हाट डू यू टाइप, यू टाइप 32099। इससे बड़ा क्या हो सकता है, 2 डिजिट नंबर 99। अब इसको डिवाइड कर लो आप 35 से, 32099 डिवाइडेड बाय 35। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 917 पॉइंट डेसिमल जाएंगे। आपको मल्टीपल चाहिए ना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 917 इंटू 35, तो आपका नंबर है 32095। दैट इज द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल। गलती से भी इनको एक्सपैंड मत करना, 10a प्लस b करके आप एक्सपैंड कर रहे हो, फंस जाओगे। लार्जेस्ट बोला है, 99 लिख के डिवाइड कर दो। आपको मल्टीपल चाहिए, तो 91735। मुझे इस वाले क्वेश्चन में क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर तो है, रिमाइंडर डेसिमल, इसको आप क्या कर लो, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ऐसा सोचना पड़ता है, यू नीड टू थिंक लाइक दिस टू क्रिएट मेथड्स फॉर कैट। मैं नहीं बोलूंगा आपको पेंसिल स्मगल करो एग्जाम में छुपा के, बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होगा, ये सब उल्टे पुल्टे काम नहीं करने हैं बेटा। कुछ कुछ एग्जाम सेंटर्स पे जो बेल्ट पहनते हैं ना हम जीन्स में, वो तक निकलवा देते हैं, कहते हैं मेटल इज नॉट अलाउड। जो हम ये धार्मिक सिंबल पहनते हैं देव देवताओं के, या रिंग्स पहनते हैं, वो भी निकलवा देते हैं किसी के सेंटर पे। अब कहीं कहीं पे लैक्स होती सिक्योरिटी, बच्चे मोबाइल लेके चले जाते हैं, बोलते हैं बंद करके साइड में रख दो। तो डिपेंड्स अपॉन सेंटर दैट यू आर विजिटिंग और यू आर allotted. Moving on from this, I hope this part is clear. रिमाइंडर कैसे निकालें विथ अ कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर इन एग्जाम। चलो, सो रिमाइंडर रूल्स फॉर फंक्शंस ये भी किया है हमने, इफ यू रिमेंबर। आपको अगर कोई fx दे दे और आपसे कहे x प्लस a से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो इसका साइन चेंज करके पुट कर दो। अगर कोई fx को बोले आपको डिवाइड करो x माइनस a से, इसका साइन चेंज करके पुट कर दो। वी हैव डन दिस इन पॉलिनोमियल्स वन, डेरिवेशन के साथ किया आपने। कभी ऐसा फंक्शन आ जाए, इसका भी लिमिटेशन आई विल टेल यू, ऐसा आपके सामने आ जाए fx is equal to x to the power 5 minus 2x to the power 4 minus x cube plus 4x square plus x plus 7। आपसे कह दे इसको डिवाइड करो आप x माइनस 2 से और रिमाइंडर बताओ, इसको डिवाइड करो x माइनस 2 से और रिमाइंडर बताओ। तो ये -2 का साइन चेंज कर दो, 2 इसमें 2 पुट कर दो, 2 की पावर 5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7। ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो गए, ये होता है 8, ये होता है 16, 16 माइनस 8 8 प्लस 2 प्लस 7, तो 17 इज द रिमाइंडर। व्हाट इज द लिमिटेशन हियर, क्या लिमिटेशन है, डिवाइजर में x का पावर 1 होना चाहिए। याद करो ये सब सीखा आपने। अगर स्क्वायर बन गया देन वी यूज द लॉन्ग डिविजन फॉर्मेट। अगर ये x स्क्वायर माइनस 2 बन जाता तो हमने वो भी किया हुआ है, लॉन्ग डिविजन फॉर्म, पॉलिनोमियल्स।
क्लियर है? कंफर्मेशन ऑन दिस. अगर रिमाइंडर 0 आ गया, व्हाट डज इट मीन? इफ द रिमाइंडर टर्न्स आउट टू बी 0, मतलब ये इसका डिवाइजर है, ये इसका डिवाइजर है. These are divisibility rules and remainder rules for functions. That's done. चलो अभी रिमाइंडर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. Go on. Take 2 minutes.
Good. So you start observing कि this is not a single question of remainders, it's a combination of multiple values. गलती से भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला मत लगाना, becomes complicated. आपने 10 को डिवाइड किया 6 से, रिमाइंडर 4. 100 को आपने डिवाइड किया 6 से, प्लीज पे अटेंशन. 100 को डिवाइड किया आपने 4 से, 96 डिविजिबल, रिमाइंडर 4. आपने 1000 को भी अगर डिवाइड किया 6 से तो आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा. क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, ये 100 है, ये 1000 है, रिमाइंडर हमेशा 4 आता है. तो रिमाइंडर आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स. तो आपका रिमाइंडर आएगा 400/6. तो ये हुआ ना 4 इंटू 100/6. तो 4 इंटू 4/6, 16/6. रिमाइंडर वुड बी 4. इट्स अ रेप्लिका ऑफ कैट क्वेश्चन. बहुत टाइम पहले कैट में आ चुका है. डिनोमिनेटर 7 था. अभी एक बात सुनो, ये जो है, ये 7 से डिवाइड करने के 4 क्वेश्चंस हैं. 1 2 ए बी सी डी, और फिर वही नंबर 9 से, वही नंबर 13 से, एंड सो ऑन सो ऑन. सो बेसिकली छोटे छोटे 6 क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपके 8 क्वेश्चंस बन जाएंगे. ट्राई ए एंड बी ऑन द स्क्रीन. आपने 2-3 अलग अलग मेथड सीखे हैं, सब अप्लाई कर दो, व्हाटएवर यू हैव लर्नड.
आंसर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के आपने देखा वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 7। 7 का साइकिल ही 6 का होता है। अगर साइकिल 6 का होता है आपको केवल इस पे ध्यान देना, हाउ कैन आई रीअरेंज दिस। देखो 231 divided by 6, 3 times is 18, 8 times this is 48, बच गया 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे डिवाइड बाय 7 करके, ये 6 के मल्टीपल से, 6 के मल्टीपल से कितना आता है 3। इट इज बेसिकली 5 क्यूब अपॉन 7। व्हाट इज 5 क्यूब? 125 अपॉन 7। तो 119 is a multiple of 7। 119 is a multiple of 7। कितना ज्यादा है? 6। हो गया। वैसे ही ये जो 89 है, क्योंकि आपका साइकिल 6 कंफर्म है, 6 से डिवाइड करना है। 1 टाइम्स 6 29, 4 टाइम्स दैट इज 24, रिमाइंडर 5। तो ये लिखो भी मत, लिखो भी मत। ये जो चीज है दैट इज इक्विवेलेंट टू 11 टू द पावर 5 अपॉन 7। अब देखो इन दोनों का रिमाइंडर आपस में कितना है 4, 4 टू द पावर 5 अपॉन 7। अब यहाँ तो आप 4 से सॉल्व करो, और कैन आई से इट इज 2 स्क्वायर। ये कितना ज्यादा है? 6 से कितना ज्यादा है? 4। ये ना 6 से कितना ज्यादा, 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा? 4। 16 अपॉन 7, 16 अपॉन 7, रिमाइंडर इज 2। अब बीच में थोड़ा बहुत चेंज करना पॉसिबल है, वो आपके ऊपर है, बट डिनोमिनेटर 7 है, डिवाइजर 7 है, साइकिल 6 हो चुकी है, साइकिल इज कंफर्म 6। Moving on, try these. Comment answers. अगर आप वर्बली थोड़ा सा करें, मेंटल मैथ्स और लगाएं, यू कैन से लॉट ऑफ टाइम, लाइक 33 डिवाइडेड बाय 7,
I can say remainder is -2. जब मैं 34 को डिवाइड करूंगा 6 से टू कंप्लीट साइकिल, 34 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 4। अब यही कर रहे थे ना अभी तक, जो पावर है उसको साइकिल से डिवाइड कर रहे थे, जो बच गया उससे तो आंसर आता है, जो बच गया साइकिल के बाद दैट इज गोइंग टू गिव यू आंसर अपॉन 7। -2 का पावर 4 क्या होता है? 16 अपॉन 7, रिमाइंडर इज 2। अब जैसे मैंने 24 को डिवाइड किया 7 से, ये सी का आंसर है। इफ आई डिवाइड 24 बाय 7, 21 डिवाइड होता है, बच गया 3। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 6 से, क्योंकि साइकिल 6 है, बच गया 4 अपॉन 7। तो व्हाट इज दैट? दैट इज 81 अपॉन 7। 3 to the power 4, 3 to the power 4, 81 upon 7, remainder is 4. Done. 2 and 4. Moving on. Yeah. This time it is 9 and try to understand 9 is not prime. 9 prime नहीं है, ये मत कहना साइकिल इज 8। देखो ट्राई करो। इसमें आपको साइकिल डिराइव करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज फर्मैट्स थ्योरम।
Answers? Comment your answers. इसमें टाइम लगेगा, नथिंग रॉन्ग विद इट, सॉल्व करना आपको, उतना एफर्ट लगना है. Here what I have is 5 to the power 120, 321, 5 to the power 321, 231 by 9. यहां बनाते हैं 5 की पावर 1 अपॉन 9, 5, 5 स्क्वायर अपॉन 9. तो आपको पता होगा रिमाइंडर बाय 9 मीन्स एडिशन ऑफ डिजिट्स. 5 स्क्वायर is 25. 25, 2 plus 5, remainder is 7. 5 cube upon 9, क्या होता है 5 cube? 125 होता है, 125. 1 plus 2 plus 5, remainder is 8. अब आप यहीं पे रुक जाओ, you stop here. अगर रिमाइंडर 8 है, can I say रिमाइंडर -1 भी चलेगा? रिमाइंडर -1 भी चलेगा. तो ध्यान देना, learn this part. पावर 3 पे रिमाइंडर -1 है, याद रखना, माइनस नहीं भूलना है. मैं इसको 3 में ब्रेक करूंगा. आई विल डिवाइड दिस बाय 3. 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21 अपॉन 9. तो मेरा रिमाइंडर है -1 टू द पावर 77. तो आप ये समझ रहे हो, ऑड पावर है. -1 के ऊपर आप क्यूब लगाओ, -1 के ऊपर पावर 5 लगाओ, -1 के ऊपर पावर 7 लगाओ, तो माइनस बाहर आएगा. तो रिमाइंडर आ गया -1. लेकिन -1 कभी आंसर नहीं होता, तो आंसर में क्या लगाओगे आप? ये रहा आपका आंसर. अब मैं 9 से डिवाइड करने जा रहा हूं 11 को, तो सीधा 2 लिखो. 2 टू द पावर 89 अपॉन 9. अब यहां भी ध्यान दो, जब आपके पास क्यूब आता है 2 का क्यूब, रिमाइंडर इज 8, 8 -1. एक ही बात है, सीधा आगे आ जाओ इसके. आप इसको 3 में ब्रेक करो. 3 इंटू 2 6, 29, 29 डिवाइड होगा 9 टाइम्स 27, बच गया 2. आई होप आपको पावर हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है. यू आर नॉट फेसिंग प्रॉब्लम विथ हैंडलिंग द पावर इटसेल्फ. तो ये क्या देगा मुझे रिमाइंडर? -1. ऊपर क्या है? 29 इंटू व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4 अपॉन 9. तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास -4. बट -4 तो आंसर हो नहीं सकता, तो द रिमाइंडर आंसर वुड बी 5. Learn this, take your time, copy this down. Moving on, try these.
देखो, इफ यू नोटिस, जो C है इट इज 3 into 11 with power 24. आप जब इसको 9 से डिवाइड करोगे, 9 is what? 3 square. आपको दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, बाय कुछ भी हो। आप जब 3 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, नो रिमाइंडर। पेन भी क्यों चलाना है आपको, आप ये समझो, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 24 खुद मल्टीपल ऑफ 3 है, और कितना पावर है? 124। मतलब कि 3 का पावर 124 तो है ही, उसके बाद और कुछ भी हो। व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर, तो रिमाइंडर वैसे ही 0 आना आपका। तो ये बेटा 30 सेकेंड्स के, 10 सेकेंड्स के क्वेश्चंस हैं। वंस यू ऑब्जर्व दैट हो क्या रहा है, 3 के मल्टीपल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पावर है, तो 3 की बहुत बड़ी बड़ी पावर है, तो 9 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। They'll be divisible by 9. Any doubts in this? Try this. कि अब डिनोमिनेटर क्या है? 13, तो आपकी साइकिल क्या होगी? 12। आपको सीधा इनको डिवाइड करना है 12 से, जो बच जाएगा इज द पावर। 231 डिवाइडेड बाय 12, 1 times 12, 111। अभी 8 times it is 96, 9 times it is 108। ये जो 3 बच गया ना, दैट इज द पावर। ये 5 क्यूब बन जाएगा अपॉन 13, तो ये बन जाएगा 125 अपॉन 13। डू यू अंडरस्टैंड? 117 इसका मल्टीपल है, 117 इज अ मल्टीपल, तो रिमाइंडर इज 8। खत्म। वैसे ही 89 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 12, 12 इंटू 7, 84, बच गया 5, तो 5 बन जाएगा इसका पावर। 11 का पावर 5 अपॉन 13। अब 11 का पावर 5 कोई कैसे निकाले? तो -2 का पावर 5 अपॉन 13, विच इज -32 अपॉन 13। अब आप समझो 39 डिवाइड होता है, 39 डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर -7 आ गया। बाहर एक माइनस था और अंदर एक -7 आ गया।
The final remainder is 7. Guys, confirm if this is clear. Same goes for these two. Cycle is 12. सीधा 12 से डिवाइड करो. If I divide this by 12, 24 डिवाइड होता है, बचता है 10. 33 to the power 10 upon 13. अब 26 डिवाइड होता है, बच गया 6. 6 to the power 10 upon 13. अब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. 6 का पावर 10 मेरे को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता. तो 2 2 3 3 करके पावर को ब्रेक करो. कैन आई राइट दिस एज 36 का पावर 5 upon 13. नाउ डू यू सी 39 डिवाइड होता है, बच गया -3. -3 का पावर 5 अपॉन 13. तो माइनस बाहर ले आओ. 3 का पावर 5 क्या होता है? 243 अपॉन 13. इसे सॉल्व करना है. यूज अ कैलकुलेटर. नोबडी केयर्स. 3 का पावर 5 इज 243. 243 डिवाइडेड बाय 13. जो इंटीजर पार्ट है उसको हटा देना है. तो हमारा रिमाइंडर आ गया -9. अभी तक हमारा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 9 है, तो ओवरऑल -9 है. -9 कैन नॉट बी द आंसर, तो आंसर वुड बी 4. अब डू यू सी 12 का साइकिल है,
आप इसको डिवाइड करोगे 12 से, 4 बच जाएगा, 24⁴/4 26 इज डिविजिबल, तो बच गया 26 डिविजिबल बच गया -2⁴/4 ये क्या होता है 16/13। तो ना एक ही चीज की आपने 8-8 9-9 बार प्रैक्टिस कर ली, मैंने एग्जाम्पल पहले थियोरी में करा दिए, अब मिस्टेक्स नहीं होंगे। यू हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ द बेसिक फॉर्मेशन a⁴b/c। हमने दो यूज किए, एक तो साइकिल को डिराइव करना हमने देखा है और दूसरा फेरमैट्स थ्योरम हमने देखा अभी तक। आगे जाके अभी ऑयलर्स आएगा, रिवर्स रिमाइंडर थ्योरम आएगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आएगा और आगे एडवांस आएंगे, बट फंडामेंटल्स आर इन प्लेस। आपको नेगेटिव रिमाइंडर यूज करना आ गया, कैसे बेस को चेंज करना, जैसे यहाँ पर 6 था, हमें 6 का पावर 10 या था, आपने ब्रेक करके 36 कर दिया, फिर ब्रेक करके and so on so on so on। तो you have all the tools needed to solve such questions। इसे कंफर्म करो तो we'll move on to the next type of question। Try this। अब जब ऐसा उल्टा पुल्टा डिनोमिनेटर आ जाए 342 और आपको क्लिक ना करे क्या हो रहा है इसमें, व्हाट इज स्पेशल, आपने न्यूमरेटर पे ध्यान दो, यू फोकस ऑन द न्यूमरेटर। 7 का आपको कोई पावर पता है, यू नो एनी पावर ऑफ 7 दैट इज गेटिंग क्लोज टू 342, पावर ऑफ 7, 7 क्यूब इज 343। अगर आप 7 क्यूब को डिवाइड करोगे इससे, योर रिमाइंडर विल बी बाय डिफॉल्ट 1। तो आपको पता पड़ गया साइकिल 3 का है। आप पावर 1 पावर 2 पावर 3 करके बना ही लेते, आप साइकिल डिराइव करोगे इस तरीके से तो भी हो ही जाएगा, बट जब डिनोमिनेटर टेढ़ा होना तो यू शिफ्ट योर फोकस टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का पावर 3, क्या ये 3 का मल्टीपल है, इज 84 अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब साइकिल कंप्लीट है। और जब साइकिल मल्टीपल होगी 3 का कंप्लीट होगी, रिमाइंडर वुड बी
1. If you are able to notice in this manner, ये हो गया आपका 20 सेकंड में सवाल. Moving on. Guys, confirmation. अब ना नंबर एक ही है. नंबर एक ही है. अलग अलग दो डिवाइजर से आपको रिमाइंडर निकालना. Go try.
तो एक एक करके यू हैव टू सी व्हेन यू डिवाइडेड बाय 5, तो भी ये सिंगल क्वेश्चन, इट हैज गॉट 2 पार्ट्स इन इट, देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस। अब आपको ये भी समझना है, देखो आप कभी किसी चीज को 5 से डिवाइड करते हो, जैसे 123 को, दिस इज द आंसर। आप 126 को डिवाइड करते हो तो 6 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर इज 1। अगर यूनिट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो वही रिमाइंडर है, और अगर 5 से बड़ा है तो कितना बड़ा है वो रिमाइंडर है आपका। तो देखो मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, दिस एंड दिस डज नॉट मैटर फॉर 5। तो बेसिकली क्वेश्चन इज 8 की पावर 222 एंड 2 की पावर 888। अब ये 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 2, 8 स्क्वायर 64। ये 4 का मल्टीपल है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये बन जाएगा यूनिट डिजिट 6, तो यूनिट डिजिट इज 0, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, दैट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। देखो ये समझा कि आपको रिमाइंडर बाय 5 डिपेंड्स अपॉन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। अब एडिशन ही 0 है तो यूनिट डिजिट 0 है, तो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल रिमाइंडर भी 0 है। अब जब मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इफ आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 7 नाउ, 7 का साइकिल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान सुनना, 7 का साइकिल होगा 6। डू यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू राइट 222, व्हेन यू राइट 888, ये जो 222 है, it is 2 into 111, which is 2 into 3 into 37। तो ये तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 6 है ना ये पावर। व्हेन यू राइट 888, it is 8 into 111, which is 8 into 3 into 111। तो ये 6 का मल्टीपल तो पहले ही है। आपके सामने एक नंबर है a, उसका पावर 6 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर है b, उसका पावर भी 6 का मल्टीपल है। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो दोनों का रिमाइंडर 1 1 आएगा, विच इज 2। पहले वाले का रिमाइंडर इज 0, दूसरे वाले का रिमाइंडर इज 2। टेक योर टाइम। मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट का लॉजिक अप्लाई कर दिया। यहाँ का लॉजिक लगाया। डू यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस थियोरी यू हैव कवर्ड इन एट द बिगिनिंग ऑफ नंबर्स? व्हेन द नंबर इज a, it's a multiple of a into 3 into 37। तो 3 तो हमेशा है। अब क्योंकि ये 2 2 2 है तो इट इज 3 into 2 6, ये 6 का मल्टीपल है। और ये 8 into 3 है, 24 is also multiple of 6। 7 के डिनोमिनेटर में when the power is a multiple of 6, remainder has to be 1। देखो कंफर्म करो ये क्लिक हुआ क्या आपको? आर यू एबल टू कीप अप विद दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन? कौन सा वाला? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकाला हमने। देखो रिमाइंडर बाय 5 विल डिपेंड अपॉन ओनली यूनिट्स पोजीशन। डिविजिबिलिटी कहाँ डिपेंड करती है 5 की यूनिट पोजीशन पे? व्हाट आई हैव हियर इज, ये है 8 8 8 2 2 2, तो ये मैटर नहीं करेगा। अब 8 की भी जो पावर है बेटा, ये 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है ना, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? जो 4 के मल्टीपल का ज्यादा होता है, दैट इज द इफेक्टिव पावर। 8 स्क्वायर 64, तो ये आपका यूनिट डिजिट है। सिमिलरली व्हेन आई हैव 2 2 2, तो ये मैटर नहीं करता। और ऊपर क्या है 8 8 8। आपको ये याद है जब नीचे इवन नंबर होता है एंड द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4,
even number, even number, with the power multiple of 4 डिजिट क्या हो जाता है 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है. What is this plus this 10, तो आपका यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये 5 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा आपका 0. किसी भी नंबर के आखिरी में 0 आ गया तो 10 और 5 दोनों का मल्टीपल है. देखो पहला वाला तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है,
यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो क्वेश्चन सी का जो रिमाइंडर है ये n/10, यूनिट डिजिट 0 मतलब 10 का मल्टीपल रिमाइंडर 0। अब 20 के में प्रॉब्लम है, वो आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। ट्वेंटी का you would be able to do in a better manner with the help of Euler's theorem. There is something called as Euler's theorem, which is used for composite denominators. अगर denominator बड़े होते हैं composite, 20 is a composite number, तो we use Euler's theorem. तो उसके लिए Euler's theorem का साथ theory बनाना पड़ेगा। अभी जुगाड़ के फॉर्म में if I had to try, so there is one approach which is customization basically. देखो, can I say 880? 880 is a multiple of 20, बच गया 8, तो 8 की पावर 222 डिवाइडेड बाय 20। थोड़ा ध्यान देना, मैंने 8 को बाहर निकाला, 8 की पावर 221 रखा अपॉन 20। व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ? देखिए, द कॉमन बिटवीन बोथ इज 4। 4 इज कॉमन, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये 2 इंटू 8 की पावर 221 अपॉन 5, इसको सॉल्व करो आप। फिर से, व्हाट इज द साइकिल ऑफ 5? 5 का साइकिल होता है 4। यहाँ पे ध्यान दो आप, 220 है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, तो 2 इंटू 8 अपॉन 5, 16 अपॉन 5, तो रिमाइंडर है 1 आउट ऑफ 5। अब ध्यान से सुनना, रिमाइंडर है 1 आउट ऑफ 5, लेकिन आपने 5 से शुरू किया था डिनोमिनेटर, या 20 से किया था 20, तो वापस जो आपने कैंसिल किया था, यहाँ पे जो आपने कैंसिल किया था वापस आएगा, तो रिमाइंडर इज 4 आउट ऑफ 20। सेम प्रोसेस यहाँ देखो, 220 इज अ मल्टीपल ऑफ 20, क्या बच गया? 2 का पावर 888 अपॉन 20। देखो मैं क्या अरेंज कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 886 अपॉन 20। ध्यान से देखो, ये 4 और ये 4 कैंसिल होके बन गया 5। इसको सॉल्व करना अपने को। 5 का साइकिल क्या होता है? 4 का। द साइकिल ऑफ 5 इज 4। तो आपको दिख रहा है यहां पर 884, ये 4 का मल्टीपल, बच गया 2, तो आपके पास बच गया 2 स्क्वायर अपॉन 5, 4 अपॉन 5। अब सवाल ये है, is was the actual denominator 20 और 5? It was 20, तो आपको लगाना पड़ेगा 4/4, तो आपका रिमाइंडर है 16/20। एक साइड का रिमाइंडर 4, एक साइड का 16/20, तो बेटा आपका रिमाइंडर यहां भी 0 है। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 20, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 20। ये 20 वाला थोड़ा आपको, बेटा 10 का मल्टीपल है ना, पिछले वाला सी वाला 10 का मल्टीपल, यूनिट डिजिट 0 मतलब 10 का मल्टीपल ना, पिछले वाले हमने प्रूव किया ना।
जब हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, वी प्रूव द यूनिट डिजिट टू बी 0. अब ना एक तरीका और है, अब देखो आप इतना सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो, डिपेंड्स कितना मेंटल एबिलिटी आपका बचा हुआ है. 4 आवर्स क्रॉस हो गए आपके. 888 ब्रैकेट 2 111 222 ब्रैकेट 8 111, क्योंकि 20 जो है इट इज अ फैक्टर ऑफ 100. तो 20 का जो डिविजिबिलिटी है इट विल डिपेंड अपॉन द लास्ट टू प्लेसेस. आखिरी दो प्लेस पे डिपेंड करेगा 20 का डिविजिबिलिटी. तो आखिरी के दो प्लेस में ये मैटर नहीं करता, आखिरी के दो प्लेस में ये मैटर नहीं करता. व्हाट डू आई हैव हियर? 88 स्क्वायर 7744 टू द पावर 11. अब ये मेरे को नहीं आता, हाउ डू आई कैलकुलेट पावर 8? तो आप क्या करो, कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, देखो आप क्या करो, 22 इंटू 22 करो विच इज 484. फिर इनको सबको भूल जाओ, इसको इंटू 22 फिर से करो, तो आ गया मेरे पास 1848. ये सब स्क्रीन पे चलेगा, इसको कट कर दो, इसको इंटू 22 फिर से कर दो, मेरे पास आ गया 1056. कट कर दो, इंटू 22 फिर से कर दो. ऐसा 8 बार आप करोगे, आखिरी में 32 आएगा, कर दो इंटू 22, आखिरी में 04 आया. अभी तक देखो कितनी बार हुआ, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6 तक आ चुके हैं अपन, पावर 6 तक आ चुके हैं अपन. 04 इंटू 22 इंटू 22, तो इंटू 22 इंटू 22 करोगे तो आखिरी में 36 आ गया. अब देखो ऊपर क्या, ऑड पावर, ए की पावर ऑड, बी की पावर ऑड, इनको ऐड कर दोगे तो ये 80 का मल्टीपल है फॉर श्योर. आखिरी के जो दो डिजिट हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 80 आएंगे. 20 का डिविजिबिलिटी भी तो बेटा आखिरी के दो प्लेस पे डिपेंड करेगा ना. ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, थोड़ा आगे निकल गए हम भावनाओं में, क्योंकि 22 का पावर 8 कैसे निकालें. यूज अ कैलकुलेटर, 22 इंटू 22, आखिरी के दो डिजिट नोट करो इंटू 22, फिर दो डिजिट नोट करो इंटू 22, करते जाओ. यहाँ जब आप यहाँ पर आ गए थे, जब आपने यहाँ तक मल्टीप्लाई किया था 56 आया था, 56 का स्क्वायर कर दो. क्यों? क्योंकि ये 22 का पावर 4 आ चुका है, ये 22 का पावर 4 आ चुका है, स्क्वायर कर दो, पावर 8 बन जाएगा. डन फॉर टुडे. Tomorrow we'll meet for one LRD and one verbal session. Time बचेगा तो we'll solve maybe 8 to 10 more question of remainders.